Hello, children. You are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th. Subject is accountancy. We are starting chapter number 5 today. Journal. This is part 1. Before we know the meaning of journal, let us recall that we learnt in chapter number 1. Every transaction is recorded in the books of accounting, and the primary work of accounting is known as bookkeeping. And for that, some books are kept with the businessmen, which are called memorandum book, rough book, or an ordinary book, waste book, which is made of rough paper, which helps businessman to remember business transactions. And later on, he records all the transactions systematically in journal and other subsidiary books. So, how the transactions, means business transactions, are recorded in a very systematic manner with using all the accounting principles and rules, from memorandum book to the main book of journal, which is called book of original records or principal book of accounting, that is journal. सबसे पहला काम जो शुरू होता है सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज, वो शुरू होता है जर्नल से. ठीक है. एक्चुअली जर्नल वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड विच इज जॉर. इट मीन्स डेली बुक और डायरी. सो दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इन विच daily transactions are written in chronological order. Chronological means date wise, in order of happening, with all its explanation and details of the accounts, which are debited and credited with the amount of transaction. Explanation means a narration, a small narration is mentioned just below each entry. Just below each entry, just to remember for which the transaction took place. Okay, so this is called book of original record, and its purpose is sorting and classification of transaction so that they can be found out comfortably, conveniently, and can be posted into the book of ledger. What is a ledger, that we shall discuss later or in other videos. Ledger is a book where the classification of account is done, and transactions related to a particular account is written at one place date wise, and their totaling and balancing is found out, and then it is taken to trial balance to find out the arithmetical accuracy. वहाँ पर ले जाकर फिर then final accounts. So this is all what the system we discussed in earlier videos. So journal सबसे पहली किताब है जहाँ पर कि सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके, अकाउंटिंग रूल्स का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस को ड्यूअल एस्पेक्ट में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है. Now on a screen you are seeing rules of journalizing, about which
you have already learnt and we have discussed in detail. So there are two approaches, traditional approach and modern approach. So in traditional approach, accounts are classified in three categories: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts are related to persons, institution, firms, companies, banks, etc. तो पर्सनल में दोनों चीज़ें आ गई, लाइव एंड इम्पर्सनल, सॉरी, विच आर नॉट लाइव, मीन्स दे आर फर्म्स or an enterprise or an organization or a firm. And in impersonal, there are two accounts: real, which are related to things, assets, property and physical appearance, matter, etc. And next is nominal account, जिसका संबंध किससे रहता है? All the expenses and losses of the business and all the incomes, profits and gains, revenues of the business. ठीक है, फिर इनके हमने रूल्स भी पढ़े थे. पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. द अकाउंट विच इज रिसीव्ड मीन्स विच इज रिसीविंग समथिंग. The account which is receiving, it is always debited, and the account which is giving is credited. In real account, whatever comes into the business is debited and whatever goes out of the business is credited. And in nominal accounts, all the expenses and losses are debited, whereas incomes, gains and revenues are credited. Means their account's name. ठीक है. Now on your screen you are seeing the proforma of journal. So journal is consisted of 5 columns. First column is for date. Second column is for particulars where entries are made with narration following double entry system. It means dual aspect, debit and credit is followed. Third column is ledger folio. Ledger folio means in this column what we write? We write the page number where the transaction in front, जो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन लिखा है वो, so that transaction is written on which page number in ledger book. So that page number of ledger is mentioned here. And we do the same. It means vice versa. This is a vice versa process. Vice versa means it happens in ledger too. You will find a column of JF, that is journal folio. And there we write the page number of journal where the related entry is made. Okay. Then 2 more columns for debit amount and credit amount. In debit amount we state the amount for which account which is debited. Okay. And next last column is, so in this column we state credit amount for that account which is credited. Okay. So how we record transactions in a journal means how we generalize. So there is a procedure you see on your screen. First is analysis of transaction. So as you see any transaction, the first basic requirement is to identify at least 2 accounts. There may be more than 2. For that we will make a compound entry and we shall discuss about this in the other videos, later videos.
तो कम से कम तो 2 चाहिए ना, क्योंकि वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. सो विच 2 अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड? दिस आइडेंटिफिकेशन इज डन by using traditional approach or modern approach of accounting. Okay, when identification is made and account's name means affected accounts are in your view, then nature of these accounts are identified, whether they are personal, real or nominal. So for this also we can we use those 2 approaches, traditional and modern. Accounts related to assets, liabilities, capital, expenses or revenue, if we follow modern approach. Then third procedure is, when identification is made, then we have to decide which account will be debited and which account will be credited. तो सबसे पहला काम ये है, एंट्री शुरू करने से पहले एनालिसिस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अकाउंट को. ठीक है, कौन कौन से 2 अकाउंट हैं. फिर उसके बाद अपन को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल. फिर तीसरा काम होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये पता करना. ठीक. देन विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस. For recording we will follow the proforma of journal. तो पहला आपका कॉलम क्या था, डेट का. तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर ईयर मेंशन करते हैं एंड देन डेट इज रिटन विथ मंथ. ठीक है. सेकंड कॉलम इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर तुम्हें एंट्री करना है, यानी कि राइटिंग पार्टिकुलर्स. तो एंट्री इज रिकॉर्डेड हेयर. सो सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, डेबिट, ऊपर की लाइन में, और नीचे की लाइन में जो आएगा वो अकाउंट आएगा क्रेडिट वाला. तो जब हम डेबिट लिखते हैं तो उसको थोड़ा पास में लिखते हैं अकाउंट के, और क्रेडिट वाले को थोड़ा आगे ब्लैंक स्पेस देके फिर 2 करके हम उसको लिखेंगे. ठीक है. फिर थर्ड कॉलम में क्या लिखना है तुम्हें, लेजर फोलियो नंबर, वो लिखना है तुम्हें. तो लेजर फोलियो, अब चूँकि लेजर अभी बनी नहीं है तो हमने अभी सीखी नहीं है, इसलिए उस कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी जब हम बनाते हैं. और जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, जब अदर वीडियोस में, देन आई शैल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट. ठीक है. एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. एंड आफ्टर मेकिंग एन एंट्री अ नरेशन इज स्टेटेड सो दैट इट गिव्स अस information which is necessary for us, and in particular column, just to separate that entry we draw a line so that it can be known that this single entry is for a particular transaction. ये अपन कर देंगे. तो ये आपका रिकॉर्डिंग वाला काम ख़त्म हुआ. ठीक है. तीसरी बात आती है टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड. It is not possible that all the entries or all the transactions can be set up on a single page. Is it possible? No. So we'll go on the next page. So when we go on the next page, then we have to make a total of the page from where the total is carried forward to the next page. And for this, we write the page where the total is made. At the end we write CF, यानी कि carried forward. Okay, total carried forward, it is mentioned. And on the very next page, on the top, in particular columns, we write total brought forward, TBF in short form you can write. And whatever total was on the last page, it is mentioned on the top on the very next page. ठीक है. So short means abbreviation you can use total CF and total BF. You remember this? The account of the owner is not opened, and for this there are 2 representative accounts we already have discussed. Capital account and drawing accounts. Capital account
means capital invested by the owner, and drawing when he takes away, he withdraws any money or goods from the business for his personal use. तो ड्राइंग अकाउंट अपन उसके लिए बना लेंगे. Now this is a very important about which we have already learnt when we were learning terminology in chapter number 1. You can take references of the videos of chapter number 1 for this classification of goods account. इसके लिए आप उसका reference ले सकते हो. तो goods account is classified into 6 parts. 6 accounts are there. First, purchase account. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? परचेस. कौन सा परचेस? कैश और क्रेडिट दोनों. आपने ट्रांजैक्शंस भी पढ़े थे ना, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो वो दोनों इसमें आ जाएंगे. ऐसा ही सेल्स में होगा, जो भी अपन ने बिजनेसमैन ने या बिजनेस ने जो माल बेचा होगा, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में, वो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे उतने रुपए से. परचेस रिटर्न ड्यू टू एनी रीज़न, तो परचेस रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड. नाउ यू रिमेंबर, यदि परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और सेल्स यदि क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, यदि कोई रिटर्न वापस आया है तो. फिर उसके बाद है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कंसाइनमेंट मीन्स व्हेन द बिजनेसमैन अपॉइंट्स एन एजेंट in the same town or in other town to promote his sales of the business. So he becomes a franchisee or an agent on behalf of the businessman, and goods sent to him for selling on commission basis is called goods sent on consignment account. So here this goods is considered as a regular sales and it is not used, means not shown in sales account. तो इसको अपन सेल्स में नहीं मानेंगे, कंसाइनमेंट के लिए अपन अलग से अकाउंट खोला जाएगा. देन स्टॉक मीन्स, याद करो चैप्टर नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक. एट द एंड ऑफ द ईयर द गुड्स रिमेन अनसोल्ड एंड केप्ट इन गोडाउन एंड शॉप, तो दैट इज स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक. एंड when the business was commenced, मतलब जब बिजनेस शुरू हुआ था स्टार्टिंग में इनिशियली, तो उसमें कितना माल था, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, तो 2 स्टॉक होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हमको अकाउंट्स को दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर जब भी कभी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा तो हमें ओपनिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी. So the closing stock of the present year becomes the opening stock of the next financial year. Okay, so you learn this. In next video we shall discuss about the transaction affected and will form a journal. Okay, thank you.